So that was the one character I did research for, and for Chalawa as well, because I'm a horror fan. Like, I have a problem. तो उसके लिए मेरे पास तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि I think the most difficult thing I encountered in Chalawa was learning how to scream. Because अगर आप टीवी देखें, हमारे यहाँ एक्चुअल चीख नहीं मारी जाती, मैंने कभी नहीं मारी। मुझे तो कभी-कभी लगता है एक्टर्स की वॉइस प्रोजेक्शन पे मुझे लगता है बहुत दफा काम करना चाहिए, जो नहीं होता। And despite having radio training, जब आपको कोई बोले कि okay, now you see something horrifying and scream, you can't. It took me a while. Like मैंने practice की घर पे, because Najaf told me, he was like, I know you'll do everything. चीखना है तुम्हें बहुत ज़्यादा, so work on that. And I went home and I was practicing screaming, and my dogs freaked out, and my mother was like, "What are you doing?" I was like, "I'm working." Chala. So yeah, that was a lot of fun learning how to scream. You think books shape करते हैं लोगों की personality को? Absolutely. किस तरीके से आपकी personality को कैसे shape किया? And why would you tell? Because आजकल लोग नहीं पढ़ते। Please कोई दो अच्छी वजूहात दे दें कि लोग बुक उठा लें। देखिए, मैंने इसलिए पढ़ा के पीछे आपकी बुक्स पढ़ने का बहुत बड़ा हाथ है। पढ़ने का yes, because knowledge आपको मिलती है। मैं बुक्स क्यों पढ़ती हूँ? I love discovering characters that are not me. अगर आप कोई भी किताब उठाएं, उसमें एक ऐसी कहानी है, कोई ऐसा किरदार होगा जो कि आप जैसा नहीं है, या कोई ऐसा होगा जो आप चाहते हैं बनना, so it's fun. आपको अच्छा लगता है, आपको इतनी चीज़ें मालूम पड़ती हैं जब आप किताबें पढ़ते हैं, and I love books. और मैं I'm not a Kindle person. वो जब मैं travel कर रही होती हूँ तब unfortunately I carry one. Paper की feel, the smell and the feel of it. So I think किताबें बहुत मेरी तो दोस्त थी बचपन में, I used to treat my books as my friends. It sounds really lonely, but it's not, because I had friends who read too. वो भी दोस्त थे जो हंसते थे मुझ पे कि हर वक्त किताब में मुंह घुसाया हुआ होता है and all of that. But I thoroughly enjoyed it. And now in my profession, when I'm playing a character, I have so much knowledge from all the things I've read कि मैं वो कहीं ना कहीं अब यूज़ कर लेती हूँ. कोई सबक ऐसा मिलता है किताब से, या कोई किरदार आपको याद रह जाता है, या कोई लेसन आपको ऐसा it just hits you in the heart and you carry it with you. So please किताबें पढ़ा करें, एक बहुत अच्छी चीज़ है, और चाहे Kindle पे ही पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। मुझे लगता है मतलब मैं डीप सोचती हूँ तो मुझे लगता है नवीन किताबें आपको ये भी सिखाती हैं how to carry yourself. They educate you. Absolutely. They can make you a much better person. Yeah, they shape your mind. They shape the way you talk. आपको क्या कहना चाहिए, एक तरह का कॉन्फिडेंस भी देती हैं आपको किताबें. So I think it's a very deep rooted thing कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने का शौक है, I would say जितने भी माँ बाप हैं जिनके बच्चों को ये शौक है, please encourage them, because अब तो बस ये वाला रह गया है. अच्छा, तो भाई के कहने पे आपने FM पे स्टार्ट करने का सोचा, तो जब भाई ने सजेस्ट किया तो क्या चीज़ थी सजेशन में जो आपको अट्रैक्ट की? बिकॉज कभी पहले किया नहीं था, सोचा भी नहीं था. And you were a reserved person, very serious introvert, right? I'm a huge introvert in a way कि अभी इस सेट पे भी मुझे इतनी चीज़ें पता लगी हैं अपने बारे में, and it was quite funny. But coming back to this, I started. अभी बताते भूल नहीं जाइएगा, बाद में परेशान पे बात करनी, अभी हम परेशान पे तो हमें funny बात बतानी है. But when my brother, he started radio before me, like 6-8 months before I did, and he was working for 96 at that point, और वो बिल्कुल एक brand new station था, and I was working at City FM 89. अच्छा. और वहाँ पे I used to review albums. A friend of mine actually approached me and he was like, you have a good voice and we have this time slot 1 घंटे का, और जितनी भी नई albums आती हैं, all you have to do is hear the entire album and उसका तुम थोड़ा सा बता दो कि अच्छी है या कौन सा गाना बहुत अच्छा है. अच्छा, तो ये आरजे से पहले आप रिव्यू कर रही थी? 1 घंटे का slot once a week. Not bad. And वहाँ से मैंने शुरू किया. 6 months I worked with them, and then my brother was like, you have to come here. We are dying to give you a live show. तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा था वो live show, ये वो. When I actually did my first live radio show,
my knees were shaking, मेरी आवाज़ कांप रही थी, I was terrified, despite the fact that nobody could see me, you know, but it was such a rush. And I was like, wow, I want to do this. Okay. I love this. Because एक आपको मज़े की चीज़ ये पता लग जाती है कि nobody cares what you look like. Yes. आपको देख नहीं रहा. सुकून है ना. हाँ. कुछ पोनी बांधो, कुछ है ना, जाके बैठ जाओ. जब मैं सुबह का शो मॉर्निंग चस्का किया करती थी, this is FM 91 पे, where I worked I think the longest, and they became my family. और जब मैंने छोड़ा था, I was just so sad. But I used to go in my pajamas and, you know, कप हाथ में अखबार खुला हुआ है and you're doing a show for 2 to 3 hours and you're chill. It's a good life. So वो जो मुझे चस्का लगा था रेडियो का, तो I did radio for like 10-11 years. तो लोग पहचानते नहीं, फिर आवाज़ से पहचाने थे जब बाहर जाती थी, कोई कुछ हुआ वो बताएं. आवाज़ से मुझे पहचानना लोगों ने तब शुरू किया जब मैं टेलीविजन पे आई. अच्छा, okay. वहाँ when they saw me and they heard me, they were like, ये तो वो है, ये तो वो है, ये तो वो है. So that was kind of nice कि मेरी शक्ल से नहीं, मेरी आवाज़ से लोगों ने मुझे पहचाना. अच्छा, इसकी ये शक्ल और ये आवाज़ दोनों एक बंदे की. Then people realized कि वो अच्छा. अच्छा, मैं वैसे एक बात सोची थी जब मैं आपका पढ़ी थी कि because you were introvert, तो मुझे लगा कि maybe as an RJ something जो लोग बहुत रिजर्व्ड होते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए एक चीज़ हो जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, समथिंग, बिकॉज यू नो वो थोड़ा सा पीछे रह के शक्ल सामने नहीं होती है, एक आइसोलेटेड उसमें होते हैं, तो आप अपनी एक आर्टिस्टिक एबिलिटी को डिस्कवर कर सकते हैं while not being so uncomfortable. Would you say that? I believe so. I think radio is all about your personality. जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो I was very in my rock and roll phase, you know, but at the same time I realized कि it's almost like आप किसी के साथ बात कर रहे हैं. Yeah. You know, you're getting to share information with somebody. I'm sorry, okay. This watch is just. We have a third guest. Another guest in our show today. But you know, I realized that radio is all about your personality, and it's also a very good platform to train yourself for. I think vocally, आप बहुत सीखते हैं कि आप अपनी आवाज़ को किस तरह कंट्रोल करें. आपको सिखाया जाता है कि अगर आप सुबह का शो कर रहे हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते. There is, you know, आपको नीचे लोग उठे हुए हैं, अभी सो के उठे हैं, they're heading to work. Don't yell. You want to be nice to them. Yeah, don't Already yell. अम्मा चीख चुकी है उन पे, या बीवी चीख चुकी है. Smooth आवाज़ में आप बात करेंगे, ये टोन रहेगी. अगर evening show है तो it's going to be like, hey, what's up? Because it's drive time, people are going home, they want to listen to something nice. So A, I learned that. B, I realized that being introvert is one thing, but I'm able to hold a conversation in an empty room with a mic, just being me. Because it's kind of like a one-way conversation. Yes, you know? कोई बोल तो नहीं रहा वापस. और मज़ा भी आता है, बोल दो या जो बोलना है, कोई जवाब तो ना कोई चैलेंज कर सकता है. For introverts, that's the best thing that you can do. Be in an empty room with a mic and just go nuts. Because और कोई नहीं है, हाँ लोग आपको सुन रहे हैं, but कमरे में तो कोई नहीं है ना, so you have nothing to fear about. अच्छा, तो फिर जब VJ पे आई उसके बाद you became a VJ. Yes. तब क्या, जब पहला शो गया तब क्या हालत ख़राब थी, जब अपने आप को देखा तब क्या रिएक्शन था? I was scared because I remember मेरा first live show जो था वो एक experiment था. हाँ, मुझे सीधा live में फेंका है लोगों ने कि नहीं, scary. Recorded कुछ नहीं होता, live करेंगे. So for my first ever live show, I went to Islamabad. वहाँ से एक live feed थी and I was supposed to do the show there. और मैं इतना ज़बरदस्त वाला ब्लैंक आउट हुई थी उसके बाद कि I don't remember that show. I just remember कि मैंने ग्रीन रंग का शायद कुछ पहना हुआ था and I was waiting in the makeup room. उसके बाद मेरी memory blank है. But apparently I did something right because उसके बाद I was doing like 2-3 shows a week, live shows a week. But it was a scary experience. But lucky for me, I've never been afraid of the camera. Okay. You know, मुझे कभी डर नहीं लगा कैमरे से, ना माइक से. So I think that kind of gave me the confidence to go and do acting as well. Yeah. तो जब हमसफर की ऑफर आई तो हाँ क्यों बोला? Because acting कभी कार्ड्स पे थ्रू थी नहीं. You wanted to experiment? I was thinking कि RJ and Curly, I was a DJ for 4 years. So what do I do now? Next, you were looking for the next step. Okay. You know, I thought about being an anchor,
But I did a sports show for like 6 months and that was terrible because I didn't know anything about sports. मुझे कुछ नहीं पता sports के बारे में, मुझे कोई शर्म नहीं है admit करने में. And I realized I was like I can't do this because मुझे तो information ही नहीं है इस चीज़ की. So while I was pondering and wondering and thinking, मुझे call आ गई इत्तेफाक से. And I was like okay, audition देने में क्या है, चली जाती हूँ. I went, I auditioned. 15 minutes later and they were like कि हम आपको स्क्रिप्ट भिजवा रहे हैं. और फिर स्क्रिप्ट आई. हाँ, अच्छा वो मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी, मुझे सिर्फ अपने सीन्स मिले थे. अच्छा.